कैसे हैं आप सब? वेलकम टू न्यू कोचिंग एकेडमी। मैं हूं महिमा एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं साइंस का फर्स्ट चैप्टर 10th स्टैंडर्ड के लिए, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। सो केमिकल रिएक्शंस इक्वेशंस बाय द नेम ऑफ दिस चैप्टर इटसेल्फ आपको क्या समझ में आ रहा है? व्हाट यू गोइंग टू स्टडी अबाउट दिस इन दिस चैप्टर? केमिकल रिएक्शंस, you know, whenever two things are combining and they are forming something new, that's what is reaction. तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन जब हम पढ़ेंगे तो हम क्या देखेंगे? We are looking about chemicals, how chemicals will meet, and equation is a way of representing them, that how the chemical reactions happen, and to study them better we denote them, we represent them in the form of equations. तो ये लेक्चर अगर आप इस चैप्टर को वन शॉट में, एक शॉर्ट कंटेंट में आप बहुत अच्छे अंडरस्टैंडिंग के साथ खत्म करना चाहते हैं, please look at this video because in this full video in a very short time you will get to know all the concepts from this chapter, and this chapter will be concluded in a very one short manner. Okay, let's begin with the chemical reactions. Now chemical reactions, what is chemical reaction? So whenever there are two combinations, we can say two or more than two, when two molecules interact with each other, basically they interact in some form or the other and they form a new product, and that's what we can call it a chemical reaction. Now what are some proofs the chemical reaction will happen? कैसे आप बताओगे chemical reaction हो रहा है? And what are the basic characteristics that happen? Right? So next we have some changes that happen during the chemical reactions. What are the changes you can observe? So whenever you are lighting a candle, after a point of time what is happening? The wax is completely getting melted. You can see the change when the temperature is reacting with the wax, it is getting melted. So its state is changing. So the first thing that happens is there is a change in state. Okay, whenever chemical reaction is happening, the state change happens. So whenever you give heat to ice cube, what will happen? It will convert to liquid. If you light a candle, that wax will be converted into a liquid wax. So correct? So this is the one thing why you can spot that chemical reaction is happening. Now coming to the next thing, suppose you're burning something, you're making something, जैसे हम घर पे रोटियां बनाते हैं, right? So what happens that जो कच्ची होता है हमारा जो आटा होता है, after a point पकाने के बाद what happens? It becomes different in color. So another thing that you can spot is there is a change in color. So whenever a chemical reaction happens, it is not compulsory कि हर बार ही होगा, but most of the times change in color takes place. Okay, now coming to third one, evolution of a gas. What does it mean? Evolution of gas. Evolution means taking out, releasing of the gas. So whenever a chemical reaction is happening, the gas will release. Like if you have kept something in the pressure cooker, what will happen? When you're heating something, the chemical reaction is happening. Anything, that substance that has been kept in the cooker, what will happen? It will get boiled, it will get heated, and that's why the gas will get released. Correct? This is the evolution of gas, is the third thing. And fourth one is change in temperature. In some cases, whenever the chemical reaction is happening, automatically the temperature changes. Like ice to water, you know, chemical reaction, the temperature is getting changed. Okay, clear? So this is the definition of chemical reaction. These are some things by which you can spot that a chemical reaction has happened. Okay, now let's come to what is the need of the chemical equation. The chemical equation. What is the chemical equation and what is the needed to write a chemical equation? Okay, तो chemical reaction जो हो रहे हैं हमारी डेली लाइफ में कंटिन्यूसली एवरी मोमेंट होते हैं, बट हाउ टू डिनोट देम, हमको स्टडी करना होगा तो हम कैसे करेंगे? सो वी नीड टू राइट इन अ प्रॉपर फॉर्म, एंड दैट्स व्हाट केमिकल रिएक्शंस, केमिकल इक्वेशंस कम इनटू पिक्चर. ओके, लाइक सपोज यू आर हैविंग दिस मैग्नीशियम स्ट्रिप. ये क्या है? इट इज अ मैग्नीशियम स्ट्रिप, एंड व्हेन यू आर बर्निंग इट दिस स्ट्रिप, व्हाट विल हैपन? इट विल गेट burn and the ashes will come into the chemical substance will happen, the state change will happen, right? And here what is actually happening? If you understanding this magnesium strip, oxygen is reacting with it and something is happening, but how to study? Theoretically हमें पता चलता है कि chemical reaction में क्या हो रहा है, but equation wise हम उसको denote कैसे करेंगे? Someone has not seen the reaction, like we cannot do all the reactions in practical right now, right? So to understand the reactions we write in the form of chemical equation. अब chemical equation का basic structure कैसा होता है? If you want to write a chemical equations, you have reactants on one side. जो हमने बोला था reactants. Reactants क्या होते हैं? जो दो या दो से ज्यादा molecules या atoms
फॉर्म करेंगे, रिएक्शन करेंगे, दैट इज अ रिएक्टेंट. देन यू हैव दिस arrow sign. This indicates a process. This indicates a chemical reaction. And finally, when these reactants will react with each other, interact with each other, they will form some products. So the general form of writing the chemical equation is this only. This side you have reactants, then this arrow represents the reaction and interaction happening, and finally you get the products. For example, if you want to write about this magnesium strip is clean magnesium, right? Now when we are burning it, what we are actually doing it? We are making it react with oxygen which is present in the atmosphere, right? And then what is happening? It is getting converted into magnesium oxide. Right? Magnesium will react with oxygen and will give you magnesium oxide. Correct? So this is what is. These are the reactants of this reaction. This is the reaction process going on, and this is what you are getting as a product. Clear? समझ में आ गया chemical reaction की need and chemical equation की need majorly, right? Why you need to write chemical equation? Because आपको chemical reactions हो रहे हैं, आपको उनको study करने के लिए आपको equation form में लिखना पड़ता है to make it easy to study and understand. You all studied about law of conservation of mass. सुना है किसी ने? What is law of conservation of mass? Law of conservation of mass. What does it mean? What does this law say? This law says the mass on this earth, on this universe can neither be created nor be destroyed. अगर कोई भी अर्थ इतना मास है, आप उसको नया ना तो क्रिएट कर सकते हो, ना ही आप क्रिएटेड मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हो. So it just changes from one form to the other, and same we have for energy also. So mass or energy cannot be created and cannot be destroyed. So जो मैंने अभी केमिकल रिएक्शन लिखा था, इसमें कुछ फॉर्म नहीं लिख रहा है. Mg plus oxygen giving MgO. यहाँ पे हमारे पास रिएक्टेंट साइड पे 2 ऑक्सीजन के एटम्स हैं, बट यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन का एटम है. कुछ इम्बैलेंस नहीं है. डोंट यू थिंक इट इज वायलेटिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? राइट, इट इज वायलेटिंग. सो इट शुड नॉट वायलेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. तो जब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को कंसीडर करते हैं, वी हैव टू राइट द केमिकल इक्वेशन इन व्हाट फॉर्म? इन बैलेंस फॉर्म. एंड इसीलिए आप जो केमिकल इक्वेशन देख रहे हो, तो आपको उसे बैलेंस करना पड़ता है. व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस? जितने साइड पे रिएक्टेंट साइड पे जितने एटम्स हैं, उतने ही प्रोडक्ट साइड पे होंगे. सो बोथ शुड बी बैलेंस. हाउ यू कैन बैलेंस इट? यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे 1 मैग्नीशियम है, बट हम जिसे बैलेंस करने की कोशिश करते हैं. लेट्स सी द एलिमेंट्स. हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर ऑन द रिएक्टेंट साइड एंड ऑन द प्रोडक्ट साइड? रिएक्टेंट साइड पे हमारे पास मैग्नीशियम है विच इज 1, ऑक्सीजन है 2. बट यहाँ पे मैग्नीशियम प्रोडक्ट साइड पे हमारे पास 1 है एंड ऑक्सीजन इज ओनली 1. व्हाट इज हैपनिंग? द इम्बैलेंस. अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, व्हाट शुड हैपन? यहाँ पे जितने एटम्स हैं उतने एटम्स साइड भी होने चाहिए. समथिंग इज रॉन्ग, सो यू हैव टू बैलेंस इट. तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसको 2 MgO करना पड़ेगा. यू कैन मल्टीप्लाई बाय 2. बट यहाँ पे क्या हो गया? अभी अगर इसको हमने 2 कर दिया तो यहाँ पे ये भी 2 हो गया. अगेन इट गॉट डिसबैलेंस. सो व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू पुट 2 ओवर हियर. Now if you see 2 magnesium, 2 oxygen, 2 magnesium, 2 oxygen on both the reactant and product side. And this is how you have to write a chemical equation. Chemical reaction पता चल गया? Whenever more than 2 molecules, 2 or more than 2 molecules are interacting with each other and forming a new product, that's what we call as chemical reaction. Chemical equation क्या होता है? Chemical reactions are continuously happening. To study them, to denote them in a better form, we write in the form of chemical equation. अब केमिकल इक्वेशंस के अंदर एक चीज हमने पढ़ी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता है कि कोई भी मास आप क्रिएट भी नहीं कर सकते, आप डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हो. तो यहाँ पे अगर इसको बैलेंस नहीं करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा? रिएक्टेंट साइड पे जितना हमने ऐड किया था उससे ज्यादा यहाँ पे कैसे बन रहा है, या फिर उससे कम कैसे हो गया? जितना हमने किया तो उतना ही मिलना चाहिए हमें. एंड दैट्स हाउ द बैलेंस केमिकल इक्वेशन कम्स इनटू नीड, एंड दैट वी हैव टू राइट अ केमिकल इक्वेशन इन अ बैलेंस फॉर्म. तो अभी हम सीखेंगे किसी भी इक्वेशन को हम बैलेंस कैसे करते हैं. लेट्स ट्राई विद सम एग्जांपल्स. Keep your notebook and pen with you so that you keep balancing them. Okay? Try to follow the method, you will definitely get it. Try to look at this chemical equation. Fe reacting with H2. So what are these? These are reactants. And giving by interacting with each other Fe3O4 and H2. These are the products. So what is the thing we have to do? We have to balance this equation. First of all, before balancing, आपको first step क्या होना चाहिए? आपको check करना है कि whether it is balanced or not. Check each molecule. आपको पहले काउंट करके लिखो कितने कितने मॉलिक्यूल आपको दिख रहे हैं. You can see Fe,
You can see hydrogen, you can see oxygen, only these three one, right? ये तीन चीजें दिखाई दे रही हैं आपको. Now look at the reactant side and look at the product side. Like this, you have to form a table. You have to understand what is balanced and what is not. Being a beginner, try to do it like this so that you will understand कि कैसे आपको देखना है कि वो बैलेंस है या नहीं. ठीक है, आपको अभी नए नए आपने स्टार्ट किया तो इट विल नॉट, यू विल नॉट अंडरस्टैंड डायरेक्टली बाय लुकिंग कि यहाँ पे बैलेंस कुछ है या नहीं है, करने की जरूरत है. तो आपको प्रॉपर्ली स्टार्टिंग इन 2 to 3 प्रैक्टिस क्वेश्चंस ट्राई टू डू इट लाइक दिस. धीरे धीरे आपको पता चलने लगेगा अपने आप इसको देख के कि बैलेंस है या नहीं. चलो देखते हैं. दिस इज द रिएक्टेंट साइड एंड दिस इज द प्रोडक्ट साइड. अब देखो Fe रिएक्टेंट साइड पे कितना मॉलिक्यूल्स है, हमारे पास एक एटम है. प्रोडक्ट साइड पे कितना है, Fe3 है ना, इसका मतलब है Fe3. हाइड्रोजन साइड पे कितना है हमारे पास 2. हाइड्रोजन साइड पे कितना है अगेन 2. ऑक्सीजन हियर वी हैव 1, हियर ऑक्सीजन वी हैव 4. डू यू थिंक इट इज डिसबैलेंस्ड? या डेफिनेटली इट इज इम्बैलेंस्ड. यहाँ पे Fe1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है. दिस इज बैलेंस्ड. Now remember one important thing. Whenever you will start balancing it, you have to do it by hit and trial method. What is it? Hit and trial का आप कुछ नंबर रख के देखोगे, then you will say कि हाँ इसकी जगह से ये, like यहाँ पे अगर आप जब Fe को बैलेंस करने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन यहाँ पे इम्बैलेंस हो जाएगा. Then again you have to balance it. So that hit and trial के बाद फाइनली आपको एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन मिलता है. Nothing complicated, बहुत इजी है. अगर आप प्रैक्टिस करोगे कुछ क्वेश्चंस को, you will get it very well. Okay. चलो हम इसको ट्राई करते हैं बैलेंस करने का. सबसे पहले हम पिक करते हैं. मोस्टली आपको क्या ट्राई करना है, सबसे पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करने की कोशिश करनी है. मोस्ट ऑफ द टाइम्स रिमेंबर दिस इज अ रूल. हम रूल की तरह रिमेंबर कर लो इस चीज को कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन शुड बी फर्स्ट थिंग दैट यू शुड बैलेंस. अब देखो कैसे बैलेंस करना है. यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, इट्स बैलेंस. अब हम ऑक्सीजन को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं. व्हाट कैन हैपन, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन है. तो लेट्स पुट 4 ओवर हियर. हो जाएंगे यहाँ पे 4 ऑक्सीजन. बट अब इससे क्या हुआ, जब आपने 4 यहाँ पे पुट किया, स्टेप 1 क्या किया मैंने, आई बैलेंस ऑक्सीजन. ऑक्सीजन को बैलेंस करने में क्या हो गया मेरा, हाइड्रोजन गॉट इम्बैलेंस एंड दिस विल हैपन. ये चीज याद रखो. तो ऐसा बाय थंब रूल याद ही रख लेना है कि ये दोनों इम्बैलेंस थे, इसको बैलेंस करके काम हो जाएगा. जब आप एक चीज बैलेंस करने जाओगे दूसरी चीज क्या हो जाएगी, इम्बैलेंस हो जाएगी. राइट, ठीक है. फर्स्ट वन में हमने O को बैलेंस किया बट H गॉट इम्बैलेंस. सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, अब हाइड्रोजन को बैलेंस कर देते हैं. हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 ही है, यहाँ पे 2 रख देते हैं. 2 into 2 कितना हो जाएगा 4. ओके, ये सब स्टेप में जो 2 होता है दैट इज मल्टीप्लाइड बाय द नंबर व्हिच इज कैप्ट एज द कोएफिशिएंट ऑफ दैट मॉलिक्यूल. तो दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे कितने हो गए, 4 हो गए. सो स्टेप 2 में हमने क्या किया, बैलेंस हाइड्रोजन. अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों साइड से बैलेंस है ना. यहाँ पे हाइड्रोजन कितने कितने हैं आपको, 4 into 2 8 एंड यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ पे 4 4 2 8 या 4 2 8 बैलेंस. 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन बैलेंस. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमारे बैलेंस हो गए. आयरन को बैलेंस करें तो Fe यहाँ पे 3 है, तो हमारा स्टेप 3 क्या होगा, बैलेंस Fe. Fe को बैलेंस करना इजी है. आपको 3 Fe दिख रहा है, आप एक ही दिख रहा है, पुट 3 हो गई है. डन. दिस इज योर बैलेंस केमिकल इक्वेशन. सिंपल है. ऐसे आपको हिट एंड ट्रायल से आप इसके बैलेंसिंग ट्राई करिए. Whatever questions you have, try from your textbook, from your examples. If you are facing any difficulty in any of the questions, just ask me in the comment box. I'll reply. Okay? चलो एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं क्विकली. Let's start with this example. ये वर्ड इक्वेशन है. हमने जो देखा वो सिंबॉलिक इक्वेशन है. जनरली हम सारे एलिमेंट्स को, सारे केमिकल्स को, मॉलिक्यूल्स को कैसे डिनोट करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ सिंबॉलिक फॉर्म. करेक्ट. तो ये हम इसमें फर्स्ट चीज करेंगे वर्ड इक्वेशन से सिंबॉलिक फॉर्म एंड देन वी विल मेक इट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन. राइट, केमिकल इक्वेशन है बट ये वर्ड फॉर्म है. नाउ व्हाट इज दिस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. सो प्रीवियसली अपने 9th सेट में ऑलरेडी कुछ केमिकल्स के और एलिमेंट्स के सिंबॉलिक फॉर्म आप देख चुके हो. राइट, पीरियोडिक टेबल आपने याद कर रखी है. दिस इज कैल्शियम. हाइड्रोक्साइड को हम बोलते हैं OH. नाउ रिमेंबर द बैलेंस. ये क्या होता है, 2 प्लस चार्जेस का. OH इज -1. कार्बन डाइऑक्साइड ये इट इज CO2. कैल्शियम कार्बोनेट का मतलब क्या है, Ca2 प्लस एंड कार्बोनेट होता है CO3 2 minus. Water is something that you all know, H2O. So they basically, depending on name, you should know the symbol and valency. Then only you can form the molecule. ये अपने 9th में ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में कर रखा है कैसे हम केमिकल इक्वेशंस फॉर्म करते हैं, कैसे केमिकल कंपाउंड्स को फॉर्म करते हैं विद हैविंग 2 वैलेंसी. वैलेंसीज बैलेंस करना
is very important in the beginning. Okay, तो ये क्या हो जाएगा? This is CaOH twice plus CO2 giving us CaCO3 plus H2. Okay, this is your chemical equation. Now what is your next task? To balance this chemical equation. Balance करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्या क्या इसमें available है. What are the things that you have to balance? So you have calcium here, then you have oxygen, you have hydrogen, you have carbon. These are the four things you are having in this chemical reaction. अब हम देखते हैं reactants and products के बेस पे कितने कहाँ पे अवेलेबल है. कैल्शियम यहाँ पे कितने हैं? Only one is there, right? Product side पे कितना है कैल्शियम? 1. Means calcium is balanced. Now oxygen यहाँ पे कितने हैं? O into 2, 2 plus 2. Oxygen is 4 on the side of this. Here we have 3 plus 1, 4. Oxygen is also balanced. Now coming to carbon. Carbon कितने हैं यहाँ पे? Here we have 1 carbon. Carbon. Then here also we have 1 carbon. And then coming to hydrogen. How many hydrogen do we have here? 2 hydrogens. And this side also we are having 2 hydrogens. What does it signify? That this equation is already a balanced chemical equation. So जब चीजें अगर बैलेंस होती है तो आपको यहाँ पे it is all equal. जितने कैल्शियम इस साइड पे है उतने ही एटम्स इस साइड पे भी है, राइट? बोथ द एटम्स आर बैलेंस्ड ऑन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट साइड, एंड दैट्स व्हाई इट इज ऑलरेडी अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. Okay, so the way I explained how to balance the chemical reactions, remember that and try to solve some more examples from your textbook. Now let's come to the next topic, types of chemical reactions. So in this chapter we are going to see about 4 types of chemical reactions and then 2 more as a different type of reactions. So first of all, the first chemical reaction होगा हमारा that will be combination reaction. First one is combination reaction. What is combination? इसका ideal type of equation क्या होता है? Two products will combine and will give two reactants will combine and will give one product. That is combination reaction. For example, coal का burning हो रही है. Coal is getting burned. What will happen? Coal is just carbon getting burned in presence of oxygen. It will give CO2. See, right? Then formation of water. H2 plus O2 gives H2. ये सब क्या है? अब इसको बैलेंस कैसे करोगे? तो बैलेंस यू हैव टू put 2 on both the sides. Correct? हो गया. This is the combination reaction. So when 2 elements combine to form one product, it is called combination reaction. Okay. Now next we have decomposition reaction. Next one is decomposition reaction. अब decomposition का मतलब in general क्या होता है? Breaking down. तो यहाँ पे क्या होगा? Molecule will break down into smaller molecules. So basically A will get break down into smaller molecules. It can be 2 or more than 2 molecules, right? अब इसका एग्जांपल क्या होगा? See, remember the basic definition. वो क्या रहा है? Combination मतलब दो चीज कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट बना रहे हैं. Decomposition मतलब एक बड़ा प्रोडक्ट है जो ब्रेक डाउन होकर 2 स्मॉलर प्रोडक्ट्स बना रहा है. You have to write the definition the same. See, definitions you will all get in the reference book. That is not a problem. To understand the concept, that is more important. Correct? So let's see the example of this. You have limestone. CaCO3 is a limestone, and when you are decomposing it by heating, what will happen? It will create CaO plus H2. You will get quicklime. This is the quicklime, and this is carbon dioxide. So when limestone will get breakdown, this is called decomposition reaction. Limestone is breaking down into quicklime and carbon dioxide. This is decomposition reaction. Now let's come to the next one, displacement reaction. Displacement reaction. Displacement से क्या लग रहा है देखिए? What will happen in displacement reaction? What do you think displacement will be? So basically यहाँ पे 2 elements क्या होंगे? एक दूसरे से displace हो जाएंगे. Like the elements जो ज़्यादा reactive है वो solution में से किसी और को remove कर लेगा. Means for example हम देख लेते हैं zinc plus CuSO4. तो ये क्या है basically? ये आप experimental भी try कर सकते हो. If you are taking a beaker and you are putting a CuSO4 solution here and putting zinc granules, आप zinc granules को इसके अंदर डालोगे तो क्या होगा? Displacement reaction will happen because zinc are more reactive than copper. So what happens when zinc granules are kept in CuSO4 solution? CuSO4 is a liquid solution which is a
blue color solutions. When you are going to put it, because zinc is more reactive than copper, what is going to happen? Zinc will displace the copper from this solution. So what you will get as a product is zinc sulfate plus copper will be taken out of the solution. Okay, this is how displacement reaction will happen. Now let's talk about the other reaction called double displacement reaction. Double displacement से क्या लग रहा है? What is going to happen double displacement में? जो displacement में हो रहा था उसका double means it is double displacement. Two molecules will get converted, right? This reaction Na2SO4 plus BaCl. Two products are there and the metal molecules are Na and Ba. What will happen double displacement? इस solution से metal Na इस solution में चला जाएगा और solution से यहाँ पे आ जाएगा. So what will get? Na will get displaced this Ba from this BaCl2. So it will form NaCl depending on the valency, right? Then SO4 and Ba will displace this Na from Na2SO4 means it will create BaSO4, right? So here what is happening? Double displacement is happening. Two molecules are replacing each other, displacing each other, being reacted. Clear? These were the four types of reactions. Just remember by name. आपको name से पता चल जाएगा, ज़्यादा कुछ रटाने की जरूरत नहीं. Combination, combining two, getting one product. For example, burning of coal and making of water. Second one, decomposition. Decomposition का English meaning क्या होता है? This is breaking down into smaller molecules. So a big molecule will get break down into the smaller molecules. That will give like limestone. When you are heating it, it is getting decomposed into quicklime and carbon dioxide. Then in displacement, what will happen? One more reactive element will displace the other less reactive element from its solution. So zinc will displace copper from CuSO4 solution. Clear? And last one is double displacement. Means same thing happen. यहाँ पे जो zinc हमारा अकेला था, यहाँ पे इससे भी एक solution होगा. Both the solutions are mixed. They will displace the metal ion inside them, and that is we call double displacement reaction. Got it? Try to read out from the textbook and try to understand how it is happening. Remember the definition. Whenever question is coming from such type of questions, what you have to do? Combination reaction, I suppose. Define the combination reaction. When you combine two molecules or two or more than two molecules, you will get a product that is called combination reaction. Right? Then you will write this ideal equation and then you will give some 2 to 3 examples. That's it. You will get 2 to 3 marks for this question. Correct? Okay. Now let's come to another 2 or 3 types of other reactions that are very important. And if you're going to go with chemistry with the highest classes, definitely it will be very helpful. I hope that समझ में आ रहा है. नहीं आ रहा है, you can put the doubt in the comment box. Okay बच्चों, now हम 4 reactions में पढ़ लिए. एक 2 और reactions पे और जाते हैं. Oxidation reaction. Oxidation क्या होता है? Oxidation समझिए क्या रहता है? It's all about oxygen. Simple definition है इसकी, gaining of oxygen. तो जब भी कोई एलिमेंट ऑक्सीजन गेन करेगा, it is an oxidation reaction. For example, say take copper reacting with oxygen. What will happen? You will get CuO. समझ में आया क्या हो रहा है? This copper was not having oxygen. जब उसे रिएक्ट किया तो प्रोडक्ट साइड पे क्या आ गया? इसके पास ऑक्सीजन आ गया. So whenever any element is gaining oxygen from the reactant to product side, that is called oxidation reaction. और हम क्या बोलते हैं कि इस पर्टिकुलर एलिमेंट का क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है. We call it copper has been oxidized and oxidation of copper has happened. Right, that you say. तो रिडक्शन क्या होगा? रिडक्शन इज अपोजिट. हियर इट इज लूजिंग ऑफ ऑक्सीजन. रिडक्शन में क्या होगा? ऑक्सीजन लूज हो जाएगा. सिंपल. तो ऑक्सीजन लूज होने के एग्जांपल कैसे दे सकते हैं? लाइक वी हैव CuO plus H2 and you're getting it Cu plus H2. This is copper oxide रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन से. हाइड्रोजन ऑक्सीजन के वाटर बना रहा है and you are getting copper metal alone. What is happening here? See, here copper is having the oxygen from the on the reactant side, but on the product side it is losing the oxygen. So because copper had lose the oxygen, copper has been reduced. Copper का क्या हुआ है? Reduction हुआ है. Copper has been reduced. Clear? तो इस तरह के रिएक्शन को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन रिएक्शन. अब जनरली क्या होता है? किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमेशा मोस्टली साथ में होता है. देयर आर वेरी रेयर रिएक्शंस, वेरी सिंपल रिएक्शंस आते हैं जिसमें सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहा हो. जनरली रिडक्शन हैपेंस and oxidation happens at the same time simultaneously. Like have a look at this reaction. क्या हो रहा है यहाँ पे? If you talk about copper का तो oxidation नहीं reduction हुआ है, but hydrogen को अगर आप देखोगे तो क्या लग रहा है? Hydrogen was not having oxygen, but after this point at product side it is having the oxygen.
तो what has happened, यहाँ पे copper reduce हुआ है, but hydrogen का क्या हुआ है, hydrogen has been oxidized. तो इससे हमें एक और नया रिएक्शन सीखने को मिलता है, when oxidation and reduction happen in the same reaction. सेम रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेंगे टाइम पे दो अलग अलग एलिमेंट्स का, एक ऑक्सीडेशन होता है, एक रिडक्शन होता है. When both the two things are happening on together, it is called redox reaction. इसको हम बोलते हैं redox reaction. Clear? So redox reaction क्या है? When oxidation and reduction is happening simultaneously in the same reaction. That's what we call it as a redox reaction. Got it? Now in the last topics we have corrosion and rancidity. Two types of things are there, corrosion and rancidity. So corrosion and rancidity is mostly related to oxidation part. Because of oxidation of many things, what will happen? Oxidation क्या करता है? चीजों को खराब करता है. So if you're talking about corrosion, corrosion means what? Whenever some rusty metal is there, like you have some iron utensil or iron grill in your house, what will happen? When it comes in contact with oxygen or with water, it gets corroded. Corrode का मतलब क्या है कि उसके साथ लेयर बन जाता है. लेकिन एक्चुअली होता क्या है केमिकल रिएक्शन? आयरन की बनी हुई कोई चीज है, when it reacts with oxygen, it forms Fe3O4 and this is what we call as rust. तो ये जो है वो काफी इजीली लेयर फॉर्म में निकलने लगती है एंड जिसको हम बोलते हैं करोजन या करोडिंग. तो करोजन ऐसा नहीं सिर्फ आयरन का ही होता है, कोई भी करोडेड मेटल कैन बी corrosion can happen with any metal which can be easily oxidized and taken out in the form of layer. अब corrosion को हम stop कैसे कर सकते हैं? So there are some things you can put paint करके आप corrosion को stop कर सकते हैं. You can do the galvanizing. Galvanizing का मतलब होता है आयरन को आप कवर कर दो. गैल्वेनाइजिंग जनरली होती है जिंक से. जिंक मेटल की कोटिंग आप लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, वो गैल्वेनाइज हो जाएगा. सो डायरेक्टली ऑक्सीजन क्या करेगा, आयरन की कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा. जिंक विल बी द लेयर बिटवीन दैट एंड दैट्स व्हाई corrosion कैन बी प्रिवेंटेड. क्लियर हो गया? तो मेजरली अगर आप देखोगे तो ये ऑक्सीडेशन का ही एप्लीकेशन है. और ऑक्सीडेशन का एक और एप्लीकेशन हमारे पास सेम चैप्टर में है व्हिच वी आर कॉलिंग इट एज रेंसिडिटी. अब रेंसिडिटी क्या है? रेंसिडिटी ये होता है जनरली मेटल वाले एलिमेंट्स. रेंसिडिटी होती है फूड और एडिबल आइटम्स में. आपने देखा होगा ना, कभी कभी हमने गर्मियों के टाइम पे कुछ खाना रखा है, वो दूसरे दिन खराब हो गया. यू कैन सी सम white थिंग ऑन इन दैट, समथिंग स्मेल इज कमिंग फ्रॉम दैट फूड. व्हाट हैपेंस, व्हाट इज दैट? दैट इज रेंसिडिटी. तो कभी भी कोई फूड मटेरियल, एडिबल मटेरियल जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाता है, सो व्हाट हैपेंस, इट गेट रेंसिड, इट गेट सोर, यू कैन नॉट ईट इट. तो उसमें बैक्टीरिया फिक्स हो जाते हैं, तो ऑक्सीजन कम्स इनटू कांटेक्ट एंड रिएक्ट. तो उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो इन द डिफरेंट फॉर्म में चले जाते हैं, डोंट बिकम एडिबल. करेक्ट? सो दैट इज व्हाट वी कॉल इट रेंसिडिटी. अब इसको क्यों कैसे स्टॉप कर सकते हैं? बाय कीपिंग द फूड मटेरियल इन द एयर टाइट कंटेनर. होता है ना, कोई भी चीज को बस अच्छे से प्रिजर्व करना चाहते हैं, क्या करते हैं, उसको एयर टाइट कंटेनर में पैक करके रखते हैं. एंड दैट्स हाउ रेंसिडिटी कैन बी स्टॉप्ड. एंड जनरली some of the things like oil and these kind of lubricants are used to prevent the food material from becoming rancid. So clear? Oxidation के दोनों के examples हैं corrosion and rancidity. Both are the ultimate consequences of oxidation. Clear? So ये chemical reactions, जैसे हमने यहाँ पे से दो एक real life examples देखे, वैसे आप daily life में बहुत सारे real life examples देखते हैं. So chemical reactions में chemistry part नहीं है जो हम theoretically पढ़ते हैं. It is something that you do in the real life every day. It is a very daily based examples that you can see, and that's why it is, to study them, to read about them is very important. I hope you understand the chapter. Do like, share and subscribe. And this is the class which is already in the physical center, so you can reach. Location is tagged with the video. You can definitely contact us on mail. And if you like, please subscribe the channel and keep sharing with your friends. Thank you so much.